यार मुझे टेक इंडस्ट्री में जॉब करनी है लेकिन कोडिंग भी नहीं करनी। नो वरीज। हु सेड कि टेक इंडस्ट्री में सभी को कोडिंग आती है या आनी चाहिए? There are a number of other tech jobs you can check out that don't require you to code, but they still pay you a handsome salary. And that is possible with something known as no-code tools. So if you want to work in tech and don't know how to code or don't want to learn how to code, stick around, as that's what we're going to talk about in today's video. Let's get started, shall we? Okay, first things first. What is no code anyway and how does it even work? तो ये जो नाम है ना no code, ये अपने आप में ही काफी self explanatory है and it simply refers to an approach जिसमें आप बिल्कुल real developers की तरह से websites या apps बना सकते हो without having to write any code. Now, does that mean you're creating things out of thin air like magicians? No. The trick here is कि आप जो भी कोई no code सॉफ्टवेयर यूज करोगे उसमें कोडिंग वाला हार्डवर्क ऑलरेडी हुआ होगा. All you have to do is just simply drag and drop the already existing elements. Easy, isn't it? इसके अलावा ये ट्रेडिशनल कोडिंग मेथड से काफी सस्ता भी होता है. इसी वजह से आजकल मैक्सिमम स्टार्टअप्स यूजुअली नो कोड को प्रेफर करते हैं. It saves you time, it saves you money, it saves you hassle, it saves you energy. इससे ज्यादा और क्या ही चाहिए. But with all these advantages, there's a limitation as well. At times, it may feel kind of limiting because you're working on an already written code. और ऐसे cases में it's not possible for you to customize each and everything. कुछ चीजें तो प्लेटफॉर्म पर डिपेंडेंट ही होंगी. इसके अलावा ये भी माना जाता है कि नो कोड प्रोग्राम्स रेगुलर प्रोग्राम्स के कंपैरिजन में कम सिक्योर होते हैं. तो सवाल उठता है कि इज इट गोइंग टू रिप्लेस कोडिंग? तो देयर आर टू वेज टू लुक एट इट. पहला कि क्या ये एग्जिस्टिंग डेवलपर्स को रिप्लेस कर देगा? तो द आंसर इज नो, क्योंकि डेवलपर्स सिर्फ कोड नहीं लिखते, दे ऑल्सो नो लॉजिक बिल्डिंग और सिक्योरिटी और स्केलेबिलिटी जैसे हाई प्रायोरिटी टास्क के लिए डेवलपर्स की जरूरत हमेशा ही रहेगी, क्योंकि ये सब नो कोड सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते. द अदर वे टू लुक एट इट इज इट अ गुड ऑल्टरनेटिव टू नीड बेस्ड कोडिंग देन? तो the answer is yes. अगर आपको कोई सिंपल सी ऐप या वेबसाइट डिजाइन करनी है, then you don't need to sit down and learn a whole new skill. आप सिंपल सा कोई भी नो कोड प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो. As a CEO of GitHub once said, programming isn't about typing, it's about thinking. So why not just think of the pre-built work? अब अगर इस सब से कन्विंस हो गए हो तो लेट्स लुक एट अ फ्यू नो कोड सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज इन केस यू फाइंड इट इंटरेस्टिंग. द फर्स्ट वन इज Bubble. Whether it's SaaS apps, dashboards, CRMs, social networks or marketplaces, Bubble has got you covered for all of it. It's one of the most popular choices among no-code software and has a free version as well. Plus, you can use it equally well on all kinds of devices. The second one is QuickBase. You can count on this one to be the most secure one out of all and pretty easy to build something on. Moreover, it can integrate your program with third-party apps in real time. But you only get a free trial in QuickBase and not a free plan. The third one is AppSheet. Google को ये ऐप इतनी पसंद आ गई कि they acquired it. अब अगर Google ने acquire किया है तो बढ़िया ही होगा. You can use it to build apps, automate workflows, integrate other applications, and like most of the Google stuff, it's free to start with. Now let's talk about some tech jobs that don't require any coding. The first one is being a product manager. A product manager is the one responsible for how the product turns out to be. एक product manager engineering और design teams के साथ काम करता है, customers के interviews लेता है और बाकी teams के साथ भी collaborate करता है. Mostly, उनकी responsibility होती है to bring the product vision to life, creating a roadmap for the product and assigning tasks to each team. Product manager usually earns around 18 lakh rupees per year in India. Another job could be of a UX or a UI designer. सबसे पहले, let me clarify the difference between the two because people often think it's the same job. The UX designers take care of the interaction, pathway, and framework of an application, while a UI designer does the visual stuff like graphics and layouts. In short, a UX designer makes things functional, while a UI designer makes them visually appealing. इन दोनों में कुछ skills common भी होती हैं, so if you want, you can be both of them. एक UI डिजाइनर की एवरेज सैलरी 5.7 लाख रुपीस पर एनम तक होती है और एक UX डिजाइनर की एवरेज सैलरी 10 लाख रुपीस पर एनम तक की होती है. Then we have a product designer. A product designer looks over everything from UX UI to branding. You'll have to make sure कि प्रोडक्ट का डिजाइन प्रोडक्ट के यूजर्स और बिजनेस दोनों के लिए यूजफुल है. ये तो थोड़ा सा प्रोडक्ट मैनेजर जैसा साउंड कर रहा है,
साउंड थोड़ा सा सिमिलर जरूर कर रहा होगा, लेकिन ये है दोनों बहुत डिफरेंट। आप ऐसा कह सकते हो कि प्रोडक्ट डिजाइन इज मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स सॉल्विंग यूजर्स प्रॉब्लम्स, व्हाइल अ प्रोडक्ट मैनेजर हैज टू मेक श्योर दैट द बिजनेस गोल्स आर मेट, दो they do overlap in a few responsibilities just like UX and UI designers. एक average product designer साल का 12 लाख रुपए तक कमा सकता है। Then we have a business analyst. A business analyst conveys the purpose of the product to the stakeholders, does market research, streamlines everything on tech and business sides and determines the monetary value of the product among other things. ये अगर थोड़ा सा ज्यादा technical लग रहा हो तो you can think of it as someone who bridges the gap between tech and business. You may require a little bit of coding here, but an average business analyst earns an average income of 9 lakh rupees per annum. And finally, we have the product analyst. एक प्रोडक्ट एनालिस्ट प्रोडक्ट के डेटा को एनालाइज करता है कि यूजर्स प्रोडक्ट को लेकर कैसा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, और फिर इस एनालिसिस के बेसिस पर ये प्रोडक्ट डिजाइन और डेवलपमेंट टीम की मदद करता है टू इंप्रूव द प्रोडक्ट। A product analyst keeps an eye on the metrics, deeply understands the user behavior and helps the team to experiment with different elements. As a product analyst, you can expect to earn around 11 lakh rupees per year. You see कितने सारे options हैं for you to explore tech without being a coder? If you're still skeptical about it, let me ask you this. What's the biggest tech company? Apple? Who's the face of Apple? Steve Jobs? Fun fact for you, he never wrote a single code in his life. Take your time to ponder over this. Meanwhile, I'll take a leave for now and I'll see you in the next one. If you liked hearing me for the last 10 minutes, like or subscribe zarur karte raho. Bye bye.